size of operator in C. So far we have discussed different types of operators: arithmetic operators, relational operators, logical operators. The next kind of operator that we are going to discuss are size of operator. Size of operator is a compile time unary operator that determines the size in bytes of a variable or data type. First of all, it is a unary operator. That means it operates on one operand, right? And it is a compile time operator. Why it is a compile time operator? क्योंकि जो हमारा size of operator होता है, basically it determines the size in bytes. मतलब there are different types of data types. हमें पता है there are integer type of data type, float data type, double data type, character type of data type. There are different types of data types. Each type of data type is been assigned different bytes in memory, right? तो size of operator ये determine करता है कि ये particular data type कितने bytes of memory इसको असाइन किए गए हैं, उसका साइज कितना है इन बाइट्स, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है उसे हम कंपाइल टाइम ऑपरेटर कहते हैं. कंपाइल टाइम ऑपरेटर इसलिए कहते हैं बिकॉज जो साइज ऑफ डेटा टाइप है इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर. जो हमारे साइज ऑफ ऑपरेटर का सिंटेक्स है इट इज साइज ऑफ डेटा टाइप. अब यहाँ पे द साइज ऑफ डेटा टाइप कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ फ्लोट, इट कैन बी डबल, इट कैन बी कैरेक्टर, राइट? जो हमारा साइज ऑफ डेटा टाइप है वो ना ही सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप्स का साइज डिटरमाइन कर सकता है, इट कैन ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर हो गया, राइट? सो साइज ऑफ ऑपरेटर कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ बोथ बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड user defined data type. As I have mentioned here, the size of operator determines the size in bytes of a variable. Suppose we have a variable x, right? Or it can also determine the data type of size of data type. So data type will be integer, float, double. But what if the data type integer value, integer data type को we are assigning the value x, ठीक है? तो वहाँ जो हमारा सिंटेक्स है साइज ऑफ, अगर हम यहाँ वेरिएबल यूज कर रहे हैं सपोज साइज ऑफ एक्स, सो यूजिंग द पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल, बट इफ वी आर यूजिंग डेटा टाइप, यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप का नेम मेंशन करेंगे तो यूजिंग पैरेंथेसिस इज मस्ट हियर. We know that the computer memory is divided into byte addressable chunks or it is a collection of byte addressable chunks. तो suppose अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि वेरिएबल x जो है वो इंटीजर टाइप का है, राइट? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, दैट मीन्स इट विल टेक 4 बाइट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. तो साइज ऑफ वेरिएबल x विल रिटर्न 4. साइज ऑफ वेरिएबल x मतलब इंटीजर जो डेटा टाइप है वो कितने बाइट्स ले रहा है मेमोरी में? 4 बाइट्स ले रहा है. उसको 4 बाइट्स असाइन हुए हैं मेमोरी में. किसको असाइन हुए हैं? x वेरिएबल को. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. दिस इज द मेमोरी, राइट? और यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं दैट दीज 4 बाइट्स आर असाइंड टू x. क्यों? क्योंकि x इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप एंड साइज ऑफ विल डिटरमाइन कि x कितना साइज ऑफ बाइट्स इंटीजर डेटा टाइप हमारा लेता है. सो दिस इज साइज ऑफ ऑपरेटर. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है उसमें द डेटा टाइप जो है, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं उनकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर. मतलब इट मे वेरी फ्रॉम मशीन टू मशीन. द रिजल्ट ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है? जो साइजेस है हमारे डेटा टाइप के इन सी दैट वेरीज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर. जैसे कि अगर यहाँ हम अज्यूम करा है सपोज अगर हम 32 पे जीसीसी कंपाइलर की बात करें तो वहाँ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डेटा टाइप विल बी असाइन 4 बाइट्स. मगर वहीं अगर हम टर्बो सी या सी प्लस प्लस की बात करें तो द इंटीजर डेटा टाइप विल कंज्यूम 2 बाइट्स, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है उसमें जो डेटा टाइप का साइज डिटरमाइन होता है इट मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर. Operands for size of operator. Size of operator is used in different ways according to the operand type. We have already discussed कि जो हमारा size of operator होता है that is a unary operator. That means it only takes one operand.
राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर कैन बी आइदर अ डेटा टाइप और इट कैन बी एन एक्सप्रेशन, राइट। सो फर्स्ट वी विल सी व्हेन ऑपरेंट इज अ डेटा टाइप। जब हमारे साइज ऑफ ऑपरेटर में जो हमारा ऑपरेंट है वो डेटा टाइप है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉट एवर it simply returns amount of memory that is allocated to that data type. Allocated to that data type means here I have taken one example, ठीक है। I just want to determine कि जो हमारा size of operator है और जो हमारा character data type है, जो हमारा integer data type है, float है, double है, वो कितनी वैल्यू बाइट्स में रिटर्न करेगा। कैरेक्टर कितनी वैल्यू बाइट्स में रिटर्न करेगा, राइट। इंटीजर कितनी करेगा, फ्लोट कितनी करेगा एंड डबल कितनी करेगा। वी विल सी इट यूजिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन। हियर आई हैव रिटन द सेम प्रोग्राम, राइट, वेयर आई एम जस्ट डिटरमाइनिंग कि जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है वो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल की क्या वैल्यूज, कितने नंबर ऑफ बाइट्स दे ऑक्यूपाई, दे आर बीन असाइंड इन मेमोरी, क्या वैल्यूज रिटर्न करेगा, राइट। सो वी विल एग्जीक्यूट दिस। While executing, it is showing me 1448. That means 1 for character, 1 byte. For integer, it is giving me 4 bytes. For float, it is again giving me 4 bytes. And for double, it is giving me 8 bytes, right? तो यहाँ पे हमारा जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट असाइन की गई है मेमोरीज को, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स एंड डबल के लिए 8 बाइट्स। बट जैसा अभी मैंने पहले कहा कि इट मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, राइट। सो here I was working with GCC compiler. So for integer it is showing me 4 bytes. I will only consider the example of integer here. Now if I run the same program for integer and I have to determine the size of integer in Turbo C++. So while compiling the program, for integer, number of bytes shown here are 2. So this is what I meant कि जो हमारा size of data type है, it may vary from compiler to compiler, right? So the output for character 1448 as we have seen, right? Now when operand is an expression, जब size of operator में expression is used as an operand, it returns the size of expression. It returns the size of expression means, and here is an example where I have taken integer a to be equals to 0. मतलब वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप आई हैव कंसिडर्ड टू बी ऑफ इंटीजर टाइप, और दूसरे वेरिएबल का डेटा टाइप आई हैव कंसिडर्ड टू बी ऑफ डबल डेटा टाइप, राइट। यहाँ तो मैंने इनिशियलाइजेशन किया वेरिएबल का, उसके बाद व्हेन आई एम यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर विद एन एक्सप्रेशन, सो द एक्सप्रेशन इज a प्लस डी, राइट, साइज ऑफ a प्लस डी। सो इट सेज जब साइज ऑफ operator is used with an expression, it returns size of the expression. It returns size of the expression, इसका मतलब क्या हुआ? इस केस में इंटीजर वैल्यू कितनी बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स लेगा, और जो हमारा डबल है, दैट मीन्स जो हमारा डी वेरिएबल है, दैट विल टेक 8 बाइट्स। ए इंटीजर वेरिएबल है और डी हमारा डबल वेरिएबल है, तो फाइनल रिजल्ट बाय डिफॉल्ट विल बी अ double value, and double value takes 8 bytes, right? So the output will be what? 8. क्यों? Because it is returning the size of the expression. It is not evaluating the expression, it is just returning the size of the expression. Here again I have taken the same example. ठीक है, आई एम सेइंग जब हमारा ऑपरेंड एक्सप्रेशन होगा तो द आउटपुट दैट इज बीइंग रिटर्न विल बी द साइज ऑफ द एक्सप्रेशन। इस चीज को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जाएगा, राइट।
So if I execute it, the answer is 8. क्यों? Because one value was of integer type, another value was of double type. So the answer should have been of double type, and double type data type takes 8 bytes, is being assigned 8 bytes. So the size, the answer here will be 8, right? We are going to see one more example here. The size of operator can determine the size of array also, right? It can even count the number of elements present in the array. So first, determining the size of array, we will see. We have taken an array of size 10, right? And the data type of array is integer type, and we have to determine the size of array. So the output of this particular program will be 40. Now why it is 40? क्योंकि जो हमारा integer data type है, we have seen so far that it is taking 4 bytes, right? And the total number of elements present in the array are 10. So 10 elements of 4 bytes each will be given 40 bytes, right? So that is this is how 40 will be the output of this particular program. That means size of the array will be 40 bytes. I will again demonstrate it. Here it is, right? Size of array we have to determine where 10 elements are being stored. If I will compile it and run it, the answer, it is giving me to be 40, because integer takes 4 bytes of value, 4 bytes, and we have 10 elements here. So size of the array will be 40. If we decrease the value of array here to be, for example, 8, right? So it should be 32. Why? Because integer will return how many number of bytes? 4 bytes. And size of array, matlab number of elements of integer type stored here are 8. So it will be 32. So the answer here is 32. So in this way we can determine the size of array. Anything written in size of operator is never executed in C. What does it mean? Expressions written in size of are never executed. Even if we assign a value inside size of, the changes are not reflected. Expressions written in size of are never executed. We have already seen it in this example कि यहाँ expression नहीं evaluate हुआ था, सिर्फ size of the expression was the size of the expression was returned, right? अगर हम यहाँ की इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें, here I have taken integer a equals to 5, integer b equals to size of a equals to 6. That means I have assigned certain value to a variable used in size of operator, and I just want to understand the concept कि size of operator में कुछ भी हम write करेंगे तो it is never executed. ठीक है? Then I have given the printf statement and I want A and B to be printed. So the output generated here will be 5 and 4. Why the output generated here will be 5 and 4? Because the value of integer A equals to 5. And here I am directly want the value of A to be printed. So the value of A to be printed will be 5, A equals to 5. But here I am using the concept of size of operator. Size of operator will only give me the size of integer variable. Integer variable B, integer variable A, or here we have taken B. So B की value will be, B का data type is of integer data type. So it will just give me the number of bytes assigned to B, that is 4, right? So the same example, I'm just going to execute it to make it clear.
a इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि a की वैल्यू जब हम असाइन कर रहे थे इंटीजर a इक्वल्स टू 5 जब वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ था, तो वी हैव नॉट यूज साइज ऑफ ऑपरेटर। तो a की वैल्यू जो 5 असाइन हुई है दैट इज डायरेक्टली प्रिंटेड हेयर, मगर जो b की वैल्यू है देयर वी हैव यूज साइज ऑफ ऑपरेटर, तो b की वैल्यू विल ओनली रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड, the number of bytes assigned to it, right? So it is, since it is of integer data type, so the value will be 4. So what it means that anything written in size of operator is never executed. It means that even if we assign a value inside a size of operator, size of, right, changes are never reflected. One more example I have taken here. यहाँ पे I have taken integer a size of printf है, right? And then I just want to, I have used printf statement to print the value of a. अब in this particular case the printf in size of is not executed. क्यों? क्योंकि जो हमारा रिटर्न टाइप है printf का सिर्फ वो कंसिडर किया जाएगा और उसका साइज इवेल्युएट किया जाएगा. So printf in size of will also not execute, as we have seen here that anything written in size of is never executed. तो यहाँ पे what will be the output of this particular program? The output will be 4 because a is of integer data type and size of operator we are using here. So printf is not executing here. Only the return type of printf will be considered जिसका size क्या evaluate, जिसका size कितना होगा, integer data type का जितना होता है that is 4. Again the same example. The size, the output is 4 here, right? Now we are going to see one question, we are going to solve one question related to size of operator. What will be the output of the following code? We have been given a code here where we have given three variables, I integer of integer data type, I equals to 5, j equals to 10 and k equals to 15. ठीक है, we have used size of operator with expression as an operand, right? And again we have used the printf statement to display the value of k. And now the result of this particular problem will be 4 and 15, that is B. How it is 4 and 15? See, we have already been discussing the concept of size of operator. ठीक है, जब हम size of operator की बात कर रहे हैं तो expression evaluate नहीं होगा. फर्स्ट केस में जब expression ही evaluate नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों नहीं होगा एक्सप्रेशन इवेलुएट? क्योंकि वी आर यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर. तो जब एक्सप्रेशन नहीं इवेलुएट होगा बिकॉज इट इज इनसाइड साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर विल रिटर्न साइज ऑफ इंटीजर. क्यों साइज ऑफ इंटीजर? बिकॉज साइज ऑफ इंटीजर यहाँ पे रिटर्न होगा. साइज ऑफ इंटीजर क्यों रिटर्न होगा? क्योंकि जो रिजल्ट है एक्सप्रेशन का दैट विल बी ऑफ इंटीजर वैल्यू, राइट? इंटीजर डेटा टाइप. तो इंटीजर का साइज ऑफ रिटर्न होगा. सो दैट इंटीजर का साइज ऑफ कितना होगा? डेटा टाइप इंटीजर का साइज ऑफ साइज ऑफ इंटीजर जो यहाँ होगा, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है दैट विल बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, तो साइज ऑफ इंटीजर विल बी 4, राइट? सो वी have 4 here, right? And again we have the printf statement that wants the value of k to be printed. और क्योंकि एक्सप्रेशन इवेलुएट ही नहीं हुआ है तो k की वैल्यू अनचेंज रहेगी, k की वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो द वैल्यू ऑफ k is 15 as initialized here. So the value of k is 15 and so hence the output here is 4, 15, that is, and the correct answer here is B, right?
We will see it by executing it. So the same question, we have been given ijk, size of operator में we have given expression as an operand, and क्योंकि we have been given expression as an operand and using the size of operator, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसका जो वैल्यू है दैट इज साइज ऑफ इंटीजर, जो कि रिजल्ट होगा एक्सप्रेशन का, दैट इज ऑफ इंटीजर वैल्यू, वो रिटर्न करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। और जब हम यहाँ पे k की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो k की वैल्यू विल बी अनचेंज्ड, इट विल बी सेम as initialized, क्यों, because since the expression has not been evaluated तो k की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। सो when executing it, the question here is not acceptable, I will comment it here, right, and now I will execute it. So the answer here is 4 and 15, right? 4 and 15 is the result of this particular question. So basically हम कह सकते हैं कि the size of operator is used for to determine the size of data types or variables. It can also be used to determine the number of elements in an array. To find out how many number of elements are present in an array, we can use size of operator. Also to allocate a block of memory dynamically, that means for dynamic memory allocation भी हम size of operator को use कर सकते हैं. Why do we want it, why do we need it for dynamic memory allocation? क्योंकि suppose we want to allocate memory which is sufficient for to hold 10 integers, for example, and we don't know the size of integer of that particular compiler, so we can allocate it with the help of using size of operator. So this is all about size of operator.